Recording. Okay, so gentlemen, the topics which we have covered and which we want to cover are the following. First of all, we started the topic which is IP version 6, and definitely the question arises, why IP version 6? So definitely we discussed already that there are some issues with IP version 4. That is the reason we wanted to have a newer version of IPv6. Although that the IP with the NAT and with the DHCP, we to some extent resolved the issues with the IP version 4, but they were not permanent. And still, with the NAT, we have some of the problems, like for example, extra processing, extra delay, security processes, security issues. So NAT, that is the reason NAT is not the solution, final solution. That's the reason with 32 bits IPv4 address, we went for a 128-bit address. So gentlemen, you already know that the major problem with this 32-bit is that we can have at the most 2 power 32 hosts or addresses. So which is equal to approximately 4.3 billion. However, we have more than 20 billion devices now, and in the near future we expect that this number will increase above 50 billion when the IoT and IoET will be there, and definitely will be there. So in this scenario, the number of these addresses are too less. That is the reason we have seen that IANA, which gives these IP addresses and which have 5 registries, all of the registries have consumed all the IPv4 addresses, which means no new IPv4 addresses are available. That's the reason we went for IP version 6, which is 128-bit, which is equivalent to 1 power to this one, which is approximately equal to 10 to the power 38, probably 3.4 into 10 to the power 38. Exactly, if I say it is 3.4 into 10 to the power 38. So you can easily understand that this is 10 to the power 9. This is a billion means 10 to the power 9. So if it is 10 to the power 10, it means 10 times more. If it is 10 to the power 11, it is 100 times more. So you can assume, you can guess that this number 10 to the power 9 and 10 to the power 38, we have too many IP addresses now which we can give to the interfaces, to the hosts. Okay, then after this we discussed a very important topic, and that was IPv6 representation. And in the IPv6 representation we talked about, number one, the normal way to represent, and as you know, we can represent the IP version 4 addresses in the dotted decimal notation, like for example 121.56.64.100 for example. So each of this represent an octet. So that's the reason it is each octet being 8 bits, so the total is 32 bits, right? So the representation is by using the dotted, you can see here the dots, the dotted, and these are the decimals, right? While in the IP version 6, we represent the IPv6 addresses in the hexadecimal notation. Hexadecimal notation. So you know, in the hexadecimal notation, each hexadecimal character, which is from 0 to 9 and from A to F, represent 4 bits. So if you have 128 bits, divide by 4, you know that it is equal to 32 hexadecimal characters. Hexadecimal characters. Okay. Normally, we can have 32 hexadecimal characters, no problem. And I will show you that we represent something like this, but we can compress it as well. And do remember that, as you know, we have the 8 bits. If you have 8 bits, we call it a byte. We call it a byte from your DLD class. And if you have 16 bits, unofficially we call it hextet. Hextet. So you can say that if it is 32 hexadecimal characters, you may call as, if you divide it by 4, so we have 8 hextets, right? So what it means basically,
It means something like this. It means something like this, that we can represent an IPv6 address something like this. So this is one hexstat, this is second hexstat, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8. I think there is something in chat. Sir, your voice is not clear. Oh. Sir, now it's clear. Sir, Okay, वो nice. पहले issue था sir. Okay, nice. So if you have any question, now it's clear. Okay. If you have any problem, so the chat is open. You can even use your mic. So it is open. So you can see that there are 8. You can say it is 8 hexstats or 32 hexadecimal characters. So you can see here 4, 8, 12, 16, and then 16, 32 hexadecimal characters, right? So this format we call as the preferred format. If you want to enter like this, no problem. This is called as the preferred format. But we have another format which is called compressed format, and in the compressed format, ladies and gentlemen, we have in the compressed, we have two rules. The first rule is that you can remove or you can leave the leading zeros. Like here you can see it is 0 deviate. So this is the leading zero. It is here I have 2 leading zeros. Here I have 4 leading zeros and so on. So the first rule is, gentlemen, that which is called omit leading zeros. So here Shoaib and company, what we do, like for example, if I have a number 01AB, so these are all hexadecimals, but it has one leading zero, so I can ignore it. I can leave it. Similarly here 09F0. So please look at here. It is the leading zero and it is not the leading zero. It is a terminating zero. So we haven't said that you should remove the terminating zero. No, only the leading zero. So it can be written as 9F0. Similarly, look at here. Here it is again. I have a single leading zero and 2 trailing zeros. I have never said that leave the trailing zeros. That's the reason you can represent it like A00. And if you have 2 leading zeros, you can remove both of them, you can omit them, and then only you can represent it by AB. So if I give you the example now in the format at the bottom, gentlemen, you can see that this is the preferred format. But what I did here, wherever I have the leading zero, I omitted it. Here I have 4 leading zeros, so from 4, I only mentioned 1. All ones. Again for the 4 zeros, I mentioned only 1. And here I have only 1 leading zero, so I omitted and I got this number. So if I enter to my computer this number, this is called as the compressed version. It is not completely compressed yet. It is only the first rule implemented. There is a second rule as well. So when implemented both of them, but first you always have to implement the first rule and then the second rule. Is it clear, Kaleem? Yes, sir. Nice. So although the number of students are not something encouraging, Elias, Kaleem, Shoaib and Asif, only 4. I don't know what the reason. मतलब अब आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई कि जी हमारी ऑनलाइन क्लास ले लें और हम क्लास में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली the scenario is not something interesting. Anyhow, okay, chat. Okay, nothing in chat. Okay, so what is the second rule? Let's see this one as well. The second rule is about double column. First rule is omit the leading zero, and the second rule is the double column. और अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें. क्या मतलब है डबल कॉलन का? डबल कॉलन का मतलब ये है
कि जहां पे आपको पहला रूल आपने अप्लाई कर दिया, जहां पे आपको कंसेक्टिव ज्यादा जीरोस नजर आए, कंसेक्टिव, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड consecutive more zeros, omit all of them. Like initial क्या था, initial तो ये 12 zeros थे, we changed to 0 0 0, but I have a 0 here as well. If I look at here, if I change this preferred into the implement the first rule, how it will look like? Look at gentlemen, 2001 colon dba, the leading 0 has been omitted, then 0 0 0 0 is 0, then 1 1 1 1, and then colon 0 colon 0 colon 0, and then colon 200. The leading zeros have been omitted. Now I have more zeros here. I have 12 bits of zeros. I have 12 not bits, sorry, it is the 3 hexadecimal, or I may call 12 hexadecimal character. So this double colon rule says that you can omit all of them and you can write something like this: 201 db8 colon 0 colon 1111 colon colon. Now colon colon twice, and then 200. So what it means, so you can see here, it is the compressed version, it is the compressed format. So you can easily enter into your machine this compressed format. You can enter the IPv6 address in the compressed format, something like this. But if you want to give in the preferred format, nobody stops you. Only you will be wasting your time. Do you got my point, ladies and gentlemen? Sorry, I don't have any lady today. तो टाइम बच जाएगा, एरर का चांस कम हो जाएगा. ठीक है लियास? जी सर. शाबाश. अब हम ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी. हमने ये भी पढ़ लिया था कि IPv6 में 3 किस्म के एड्रेसेस हैं, although 4 हैं. Number 1 is the unicast address. If the communication is between 1 to 1, one source is talking to one destination, so we call it unicast. So those addresses which are given to these machines, mostly the addresses are the unicast addresses, right? Then multicast. If it is one multiple sources, may I k, which are getting a from the multicast, may I say something like this, that if it is a network and here it is switch, and I hope you understand this. This is PC1, C1, and here I have C2, C3, C4, and up to C10, for example. But what I do, that C1 only sends to a group, which is C2, C3, and C4, and not others. So which means not C5 up to C10. So this is only a group, which means 2 or more than 2. So this is such address is called multicast address. If I hope you remember that in case of the IP version 4, there was a special class, which was class D. Class D addresses are used for multicasting, for multicast addressing, right? You remember, I hope, which is addresses start from 224.0.0.0 up to 239.0.255.255.255, right? So these range of addresses are used for multicasting in IPv4. Similarly, we will see that there are addresses for multicasting in IPv6 as well. Then the third case is the Anycast. This address was not available in the IP version 4. In IP version 4, it was unicast, it was multicast, and it was broadcast. Broadcast means, like if you remember, when the DHCP client discovers the DHCP server, it broadcasts. Like you read about the ARP. In the ARP, you broadcast, which means the client broadcast, so that and wants to get the Ji Sajid, is there any question? No. Okay, nice. So No. nice. So we talked about in IP version 4, we talked about 3 type of addresses, which was unicast, multicast, and broadcast. Now, but in case of the IP version 6, as I said earlier, we have the unicast, multicast, and no broadcast
However, it has another caste which is called any caste. What it means? It means that you are given, like for example, this is your router, and to this router, which is in, for example, in Japan, you are in Pakistan, and here is some, let it be, may I call it the Amazon site. Then I have another router, and this router R1 is connected through a cloud to another router R2, and that is in Australia. R2 is connected with another cloud, and that is in US. Another router, and to this router I have another Amazon site here. So gentlemen, you are in Pakistan here. You are in Pakistan here. So all of these three sites, whether it is in Japan, whether it is in Australia, or it is in US, Washington, for example. So the nearest to you is Japan. So all of these three sites will have the same IPv6 unicast address, but it will behave, it will work like a anycast, means the nearest to you, you will be getting the response from here. So such an address is called nearest device having that address will respond to you. So such a unicast address, this is an IPv6 unicast address, is called anycast. So it seems like that the broadcast is not there, but we need broadcast. So gentlemen, they are saying something not clearly. What they are saying that IPv6 does not have a broadcast address, but this is not the reality. It has a broadcast address, but the name is different, and the name has been given as all node multicast. You can understand what mean by all nodes multicast, which means you are sending to all nodes, which means in this case C2 to up to C10. C2 up to C10. So what it is? It is a broadcast simply, but they have given a new name in the multicast category, and that is the all node multicast. I hope you understood now. Yes, sir. Nice. फिर हमने बात की थी कि जिस तरह आईपी वर्जन 4 में एक स्ट्रक्चर है आईपी वर्जन 4 का, कि हमारा एक एंड के ऊपर लेफ्ट पार्ट में नेटवर्क एड्रेस होता है और राइट पार्ट में जो बाकी रिमेनिंग होती हैं, दे आर कॉल्ड एज दी होस्ट पार्ट. Because it is 32-bit. If it is 16, for example, it will be 16 as well. If it is for example 30, so it will be 2. If it is 29, so it will be 3, and so on. Similarly, gentlemen, in the IP version 6, we call them prefix and prefix length. Means that the prefix will represent, in this case, as you can see here, prefix represents the network part, and the length, the prefix length, you may call as this represent the length of this, as you can see here, that. And one thing more, in the IP version 4, this network part was represented by the subnet mask. Like for example, if it is for example 16-bit for the network, so the subnet mask, you understand, it will be 255.255.0.0, which means 16 ones in the subnet mask. If it is 30 bits for the network, what will be the subnet mask? Can anybody tell me? 255.255.255.252, which means 30 ones and only 2 zeros. I hope you understood this. You know already this. Yes, sir. Okay, nice. Gentlemen, in case of the IPv6, we don't have any subnet mask. We write the IPv6 address with a slash notation. As I have made it blue, slash notation, which means we'll be writing an IPv6 address like this, and then whether we write it in the preferred format or compressed format, but we use a slash, and then with the slash we use some number between 0 and 128, 1 and 128. For example, if I write here 64, it means that 64-bit of this IPv6 address belongs to the network, and definitely the remaining, because the total is 128,
the remaining 164 bits will be representing not the host in this case, it will represent the interface of the host. Because now we understand, probably at the time of IPv4, it was difficult to understand that a single host can have multiple interfaces. Like you have worked with, a single router can have more than one interfaces. Even your laptop can have multiple interfaces. Like it have an Ethernet interface, your laptop have an Ethernet interface, it has a Wi-Fi interface, it may have the Bluetooth interface, so it has multiple interfaces. Every interface needs an IP address. So that's the reason, instead of calling the host part, which we used to call here, you remember host part, now we call it interface ID. We call it interface ID. Right, gentlemen? Is it clear? Okay, so the IPv6 prefix length can, as I said earlier, can be from the 0 up to 128. The recommended IPv6 prefix length for LAN and most of other type of network, as I said earlier, /64, but it is only recommendation. You can have, for example, this, you can have an IPv6 address with /40, or even IPv6 address with /100. Nobody stops you. But it is understandable that if it's /100, which means the remaining 28 bits for the interface ID. Here, if it is 40, you can 128 minus 40 will be the interface ID, right? So he is saying only that it is recommended that you should go for a 64-bit interface ID. Which means if this is 64-bit interface ID, definitely the prefix will be also of a 64-bit because the total is 128. So he's saying that why? Because we will touch this topic inshallah today, that we have a method, as we know, we can assign as in the IP version 4, we have two methods to give IP address. One is static and the other is dynamic. One is static, the other is dynamic. So gentlemen, similarly in the IP version 6, we can assign an IP address statically and dynamically as well. And we'll see in the dynamic case, we have 3 different options available to us. And it's recording. Okay, so we are talking about the interface IDs, right? We are talking about the prefix length is represented by the interface / notation I was talking about. So gentlemen, I was talking about the stateless address auto configuration. Basically what it is the auto configuration. You know, auto configuration means dynamically assigning IP address. So instead of calling here dynamically assigning IP addresses, a new term has been introduced, auto correlation, auto configuration, address auto configuration. It means automatically the address will be configured by the host, right? So, but here we will see that there are, instead of one method, we have 3 methods. Why it is called stateless? That is something important to understand, right? That is important to understand. So let's continue. So among the IPv6 addresses, which are unicast, the 2 or 3 addresses are very important. One is called GUA. As you can see here on the screen, global unicast address. Here as well, global unicast address. That is one of the unicast address. It is, I can say, it is very much similar to the public IP address. It is very much similar to the public IPv addresses, IPv4 addresses in IPv version 4. So this is called, it is equivalent to public IPv4 address, right? So this is, as I written here as well, this is similar to the public IPv4 address. These are definitely, because this is public, it is not private. So you understand that it will be globally unique and it will be routable.
which means with this address, as in case of the IPv4 public IPv4 address, you can go anywhere in the world by using the internet, right? So this first address is called GUA, very important to understand. The second address is the link local address, LLA. GUA LLA. LLA stands for link local address. So this is the first one, which is the global unicast address. This is the second one important, which is the link local address. The third one we will talk about is the loopback address, which was also available in the IP version 4, 127.0.0.1, for example. Okay, what is the link local address? Link local address is whenever you enable IPv4 device, when you ever enable IPv6 on a device, which means an interface, automatically it gets an IP address which is called link local address. But this link local address is unique within the link or within the local network. This is only that's the reason that this link local address can be used for communication within the LAN, within the subnet, within the link. But this is not uniquely, this is globally unique. That's the reason this address, link local address, cannot be used to take you to Facebook, for example, or to the YouTube or other sites. Do you got my point, gentlemen? The difference between the GUA and LLA? Yes, sir. Very nice. Yes, sir. Very nice. So that is the difference between the two. Now, the other one, important one, is instead of this, I should go for the loopback address. Loopback address is, as I said earlier, when your machine talks to itself. Like if I write here CMD and I ping myself, so I can write here 127.0, for example, 0.0.10, for example. So I get the response. So from where I got this response? Definitely I got this response from my own machine. So this address is called loopback address. This address is called loopback address. Okay, nice. So we have a loopback address in the IP version 6 as well. And even you can see the other advantage. This is for the one which I presented to you just now, is about troubleshooting the fault. But if I show you the netstat, you will see that many connections are made between. Here you can see my machine is talking to this machine. It might be the machine of the Zoom. Here you can see 10.137.12.35 on this port is talking to 170.114 blah blah, and the protocol is the 443, which means the port number is 443. We will talk about that, not an issue. But at the end you will find here, gentlemen, that many of the connections will be between my machine and my machine. It means not outside. These are the connections which are outside. So these connections are then maintained or established using the loopback address. Do you got the question? Do you want to talk something, Kaleem? Do you want an explanation? No, sir. Okay, nice. तो हम अभी ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखें व्हाट्सएप पे इस वक्त मेरा वो चल रहा है, तो देखें मेरी मशीन इज टॉकिंग टू व्हाट्सएप। यस,
तो चलिए जितनी देर में ये कंप्लीट करता है हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से कनेक्शन इस वक्त मेरे लैपटॉप से दुनिया के मुख्तलिफ मशीन्स के साथ आपको नजर आ रहा है कि बने हुए हैं। कहीं मैं डीएनएस के साथ बातें कर रहा हूँ, कहीं मैं व्हाट्सएप से बातें कर रहा हूँ, कहीं मैं जूम से बातें कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ सर्वर्स के साथ मेरे कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हैं, कुछ स्टैब्लिश्ड हैं, कुछ क्लोज वेट में है, कुछ टाइम वेट में है, कुछ लिसनिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वर पे नॉर्मली होते हैं। ओके, तो चलिए इसको चलने देते हैं ताकि हम आगे चलते हैं। तो लूप बैक एड्रेसेस की बात भी करेंगे। यहाँ पे वो इसका नेक्स्ट की बात कर रहा है, जो हमने भी कहा था कि हमारे पास एक टाइप के एड्रेसेस ये भी हैं विच इज कॉल्ड यूनिक लोकल। यूनिक लोकल, तो यही वो बता रहा है कि यूनिक लोकल एड्रेसेस क्या है। इनकी ये रेंज है FC00 से FDFF तक। FC00 से FDFF तक जो एड्रेसेस हैं, रेंज है, दे आर कॉल्ड यूनिक लोकल एड्रेसेस। कहता है सम सिमिलैरिटी विद RFC18। आपको पता है RFC क्या होता है? RFC क्या होता है? RFC is the standard, a document which tells you about the standards. तो यहाँ पे 1918 में प्राइवेट एड्रेसेस को एक्सप्लेन किया गया था कि जी ये एड्रेसेस प्राइवेट हैं। तो टू सम एक्सटेंट योर यूनिक लोकल एड्रेसेस are somewhat similar to the private addresses, but there are significant differences. Like unique local addresses are used for local addressing within a site or between a limited number of sites. मेरे वहां पे आप एक ही उसको इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे विद इन भी इस्तेमाल हो सकता है लोकल एड्रेसिंग के तौर पे, विद इन द साइट भी, यानी कि और कुछ 2-4 साइट्स के दरमियान भी। Unique local addresses can be used for devices that will never need to access another network. यानी अगर आप एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसने कभी भी बाहर नहीं बात करना, कभी भी फेसबुक के पास नहीं जाना, यूट्यूब के पास नहीं जाना, जीमेल के पास नहीं जाना, yes you can use this range FC00:: and then /7. इसका मतलब 7 bits for the network and remaining 121 bits for the interface, right? सिमिलरली कहता है, जब वो कह रहा है कि जी नेवर नीड टू एक्सेस द अनदर नेटवर्क, इसका मतलब इट इज नॉट ग्लोबली राउटेबल। तो ये कह रहा है कि यूनिक लोकल एड्रेसेस आर नॉट ग्लोबली राउटेड और ट्रांसलेटेड टू दी ग्लोबल IPv6 एड्रेसेस। तो ये कुछ इसके बारे में बात कर रहा है। अब हम बात करना चाहते हैं, दोबारा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं, क्योंकि पब्लिक IP एड्रेस आपको पता है कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, or GUI is very much same like the public IPv4 addresses. And it is, as I said earlier, that this unicast address, which is GUI, is globally unique and routable. That is the major thing about this GUI. Globally unique and routable. तो कहता है कि कौन सी रेंज है जो आप GUI में इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं करंटली। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ यही इस्तेमाल होंगे। वो कहता है कि हम 001 के एड्रेस इस वक्त, क्योंकि देगा कौन, वही अयाना को कौन दे, आगे कुछ देगा, 5 रजिस्ट्रीज हैं, आपने पढ़े हुए हैं। तो 5 रजिस्ट्रीज इस वक्त कौन से IP एड्रेसेस IPv6 में दे रही हैं, विच बिगिंस विद 001। तो अगर मिसाल के तौर पे इफ इट इज 001, इट इज इक्वलेंट टू, इसका मतलब इसके पहले 3 बिट्स ही हैं, और इट विच इज इक्वलेंट टू 2000। तो अगर मैं इस वक्त उस पेज पे वापस चला जाऊं जो मैंने कुछ देर पहले आपके सामने रखा था, तो देखो यहाँ पे 127 इज टॉकिंग टू माई मशीन, दिस इज द नेम ऑफ माई मशीन। तो मैंने कहा था ना कि मेरी मशीन मेरी ही मशीन से बातें कर रही है, क्योंकि कई ऐसे कम्युनिकेशन चाहिए होती हैं विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, विद इन द डिवाइस, जो कि या तो आपके लिए उसको अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर्स बनाते, तो पता ही नहीं है कितने ट्रांसमीटर और रिसीवर चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग डन बाय यूजिंग द लूपबैक एड्रेस। यू गॉट द आंसर जेंटलमैन? यस सर। नाइस, यस सर। शाबाश। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं
ns lookup, or for example www.siemens, which you know Siemens.com is one of the prominent company in the telecom world. And let's see that whether it responded or not. Oh, sorry, it doesn't respond. Oh, yes, it responded. So you can see that these are the how many IP addresses it has. It has many addresses, and all of them are IPv6. 2600 colon 9000 colon 2136 colon this. So we cannot compress it, right? Because there is no leading zeros and there is no long strings of zeros as well. But you can see all of the addresses are IPv6. So that shows the importance of IPv6, gentlemen. Because 20 years back, Siemens even were totally on IP version 4. Even if I show you for the Cisco.com or Nokia.com, check. It has 2 for IPv6 and 1 with the IP version 4. So that shows the importance and how this IPv6 is growing. Even if I show you your own Cisco.com, yeah, it also have 2 IPv6 and 1 IPv4. And you can see here, they are the compressed forms. Only 4. It means it has 0004, 0E80. And then there are double colon. Double colon shows, चलें आपको एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं. मुझे इस पहले एड्रेस को प्रेफर्ड फॉर्म में लिखकर बताएं. कौन सबसे पहले लिखकर बताएगा? Chat is with you. Two 2066 colon 20 तो नहीं 2600 2600 colon शाबाश 140F शाबाश colon ठीक है 0004 शाबाश colon शाबाश 0E8E शाबाश और यहाँ पर सर तीन दफा 000. वेरी नाइस. यही बात समझने की थी. हमने क्लास में भी ये बात की थी. साजिद उस वक्त अवेलेबल था, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दे दिया कि यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि 12 जीरोज हैं, यानी कि 3 हेक्सटेट्स हैं, क्योंकि ये टोटल 8 होने चाहिए. 1 2 3 4 एंड 5. इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडेबली 3 हेक्सटेट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं. यू गॉट द आंसर? Yes. Asif also wrote here 140F 000. Yes, and yes. Nice, very nice, very nice. Both of you, Sajid and Asif. So, today this is the revision for you people. That's nice. Okay. तो इसका मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये जो रेंज है that can be from 2000 up to 3FFF. यानी पहला एक्सेट जो है द फर्स्ट एक्सेट, जैसे अभी आपने देखा कि इट वाज 2600. अभी जो हमने आईपीस देखे दैट वाज इन द 2600 सीरीज. तो 2600 इज इन बिटवीन 2000 एंड 3FFF. इस रेंज से आईपीस जो हैं मिल रहे हैं. फर्दरमोर लेट मी टेल यू दैट जिस तरह के आईपी वर्जन 4 में था कि यू हैव दी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस वो भी क्लियर करता हूं कि आपके पास जो नेटवर्क पार्ट है इसको आप ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि राउटिंग इसके बेस पे होती है. जो नेटवर्क एड्रेस होता है इसकी बेस के ऊपर आपकी, यानी मिसाल के तौर पे इस केस में जितने भी आपके बिट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपके नेटवर्क को या टारगेट के नेटवर्क को, तो दे आर विल बी कॉल्ड एज द ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स. ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स. वहां पे हमारे पास बस इंटरफेस आईडी नहीं था, होस्ट आईडी कहते थे ना. और हम, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक तरफ तो हमारा नेटवर्क पार्ट है और दूसरी तरफ हमारा होस्ट पार्ट है. और अगर हमें सबनेटिंग करनी होती थी तो हम होस्ट से बिट चुरा के लाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे फॉर सबनेटिंग. याद है ना? यहां पे ऐसी बात नहीं है.
यहां पे लेट करें अगर ये 40 बिट्स हैं, ये 64 बिट्स हैं, तो लाजमी तौर पे ये 24 बिट्स हो गए, क्योंकि इट शुड बी इक्वल टू 64। यस, इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 पावर 24, यू कैन हैव 2 पावर 24 सबनेट्स। भला के सबनेट्स हैं, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू मेक इट 50 bits for the network, and this basically, gentlemen, do remember, this is something which is provided to you by the ISP. Your service provider provides you this global routing prefix only. बाकी आपकी मर्जी है कितने सबनेट रखते हो, कितने ये रखते हो, इंटरफेस आईडी को कितना देते हो। बात समझ आ गई? तो यही वो कह रहा है कि दी IP version 6 GUA are globally unique and routable on the IPv6 इंटरनेट। फिर क्या कहता है, करंटली तो कहता है हम ये इस रेंज से दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2000 से लेके 3FFF तक जो फर्स्ट एक्टेड है ये पॉसिबल है देना। आर बीइंग असाइंड currently available GUA begins with a decimal 2 or a 3। और ये कह रहा है कि अभी जो हम दे रहे हैं इट इज ओनली 1/8 ऑफ द टोटल। हमारे पास बहुत IPv6 एड्रेसेस मौजूद है। कौन कह रहा है? अयाना कह रहा है। ओके जी, तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारे एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है। हमारा एक तरफ होता है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। उसके बाद क्या होता है? सबनेट आईडी, सबनेट आईडी, और उसके बाद होता है इंटरफेस आईडी। 3 पार्ट हो गए ना, हायरार्किकल। यही बात हमने IPv4 में भी एक्सप्लेन की थी। तो इसकी बेस के ऊपर आपका राउटर्स काम करते हैं। यानी कि अगर आपका सोर्स है पिशावर में, आपकी डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल अमेरिका में, US में, तो रास्ते में जो आपका ये क्लाउड है जो कि इसको पिशावर से उठाएगा और US पे गिराएगा, definitely it might have multiple routers, maybe 20 routers. All of these 20 routers will use the GRF of the destination, which is in this case US, to transmit, to route the packets from Peshawar to US. तो इसलिए वो कह रहा है कि the global routing prefix, the prefix or the network portion of the address that is assigned, मैंने पहले कहा कि this is something which is given to you by the provider to the customer. The global routing prefix will vary depending upon the ISP policy. क्या कौन सा वो 40 अपने आप को 40 बिट्स देती है GRF के लिए, 30 देती है, 60 देती है, डिपेंड। अगर 60 यहाँ पे उसने दे दिए, 4 बिट्स आर फॉर यू फॉर योर सबनेटिंग, and you can have only then 2 power 4 which is 16 सबनेट्स। तो डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद है सबनेट आईडी। Gentlemen, the subnet ID, as I said earlier, is in between the interface ID and the GRF, which is global routing prefix, and the subnet ID is used by the organization to identify subnet. जितने subnet आपको चाहिए, you can design the subnets, you can implement the subnets by using your subnet ID, right? And then there is a interface ID which represent the interfaces. So the IPv6 interface ID is equivalent to the, जैसे वहां पे हम होस्ट पार्ट कहते थे, यहाँ पे हमने बेहतर नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि एक होस्ट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकती हैं, एक राउटर की मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकती हैं। तो इसलिए इंटरफेस आईडी इज ए बेटर नेम, दैट द रीजन इट हैज बीन यूज्ड इन IP version 6. So it is strongly recommended that in most cases /64 subnets should be used, which create 64-bit interface IDs. यानी कि आप /64 पे रहिए, तो /64 में क्या होगा कि आपके 64 हो गए इंटरफेस के लिए आपके में, then you have to decide कि GRF में कितने आपको ISP देती है for your routable and unique address, and then you have the remaining as your subnet ID. ठीक, ओके। देन मैंने अभी बात की थी दूसरा एड्रेस कौन सा है, एंड दैट इज द LLA, लिंक लोकल एड्रेस। तो डू रिमेंबर हमने जो 3 एड्रेसेस पे ज्यादा जोर दिया, वन इज द GUA,
one is the LLA, one is the loopback. इन तीनों पे हमने ज्यादा जोर दिया, इन 3 एड्रेसेस पे हमने ज्यादा जोर दिया। तो अब हमने GOA समझ लिया। GOA देंगे कैसे, बड़ा ही आसान है। अभी आप इसको भी देख लेते हैं, डिस्कार्ड करते हैं इसको। मिसाल के तौर पे अगर हम विंडो मशीन में जाना चाहते हैं, हम इसको सिस्को मशीन्स में भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैं नेटवर्क में आया और चलिए इथरनेट पे जाना चाहता हूँ, नेटवर्क अडेप्टर पे चला जाता हूँ और यहां से मैं इथरनेट को ही ले लेता हूँ। और क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड नाउ इन IP वर्जन 6, तो हियर इज द IP वर्जन 6 एंड आई गो टू द प्रॉपर्टीज। तो जेंटलमैन हियर यू कैन सी हियर he's saying obtain an IP address automatically, which means auto configuration की बात कर रहा है। While if you go here, then you have to give your IPv6 address here, which is your machine IP address then, which is static now. Do remember, gentlemen, that you can give the preferred form or you can give the compressed form, but more nice will be that if you assign the Ibad, raise the hand. So Ibad, I'm listening you. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमारे पास IPv4 एड्रेस पे अभी हमारे लैपटॉप काम कर रहे हैं तो IPv6 का ये फील्ड क्यों दिया हुआ है? ओके क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन ये है कि जब हमारी मशीन IPv4 पे काम कर रही है तो IPv6 क्यों? आंसर ये है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी अबाउट दी डुअल स्टैक। मिसाल के तौर पे कई ऐसी जगह होंगी जहां पे IPv4 नहीं काम, मतलब हमारे पास IPv4 की जगह नहीं है, तो हम IPv6 में ही जाएंगे। तो डुअल स्टैक का ये मतलब है कि आपने, ये है आपका एप्लीकेशन लेयर, ये है आपका एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, पहले इसको एक्सप्लेन पूरा कर दूं, फिर क्योंकि मुझे राइट करना होगा तो मैं उसको करता हूं। तो यहां पे आप उसको का अपना IPv6 एड्रेस दे दोगे, साथ आप बता दोगे कि प्रीफिक्स लेंथ कितना है। तो अब आपको यहाँ पे सबनेट मास्क लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे 255.255 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे लिख दें /64, तो पता चल गया कि प्रीफिक्स लेंथ ये। लाजमी तौर पे अगर आपका कोई IP एड्रेस है, लेट इट बी 2001 कॉलन, चले हम ABCD जो भी है कॉलन 1, इसका मतलब यह है कि पहले 64 बिट जो है वो नेटवर्क के हैं। S नहीं है जी, S नहीं हो सकता, ABCD मैंने कहा, तो ABCD एंड देन कॉलन, तो कॉलन यू अंडरस्टैंड इट इज कंप्रेस्ड फॉर्म, राइट। एंड देन अगर ये आपकी मशीन है तो क्या गेटवे नहीं होगा जिसके जरिए आप दुनिया से मिलेंगे, तो यू विल असाइन द गेटवे हियर। Then you may have the IPv6 address for the DNS. In this case, your DNS machine is working on an IPv6 address, so you will give the here and then say okay. So you assigned a IPv6 address to your window machine. And there is something in chat. If you were in last 2 classes, it is already no issue. I explain again. I know that the baat was not there. Okay. So मैंने कहा ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि IPv6 है, हमने कहा IPv4 भी है। अब इस IPv6 को मैं बंद करके IPv4 पे आता हूं एक बार, तो IPv4 भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने राउटर्स को, अपने डिवाइसेस को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमने ये समझा दिया है कि आपको डुअल होना पड़ेगा। डुअल का मतलब है कि आप दोनों को सपोर्ट करोगे, जो अवेलेबल हो आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जी बात। सर लेकिन हमारा जो सिस्टम मशीन का जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट को मतलब उस पे ऑपरेट करते हैं, तो किस तरह ये 128 को एट द सेम टाइम वो ले सकता है? दो बातें, पहली बात से मैं आपके डिसएग्री करता हूं कि आजकल तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं दे आर 64 बिट एंड नॉट 32 बिट, ठीक है। तो उससे आज आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको सिस्टम इन्फो यहाँ पे करके दिखाऊं और ओपन करूं, तो यू विल फाइंड दैट माय मशीन एंड ऑल ऑफ योर मशीन आर नाउ 64 बिट।
लेकिन फिर भी आपके साथ ये जी देख लें, नजर आ रहा है सिस्टम टाइप, यस सर यस। तो इट इज 64 बिट। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि चलें, फिर भी आपके सवाल बनता है कि जी ये तो 64 बिट है, मेरे आपका ऑपरेटिंग जो IPv6 एड्रेस है तो 128 बिट है, तो क्या हुआ, दो दफा वो चला, अगर 32 है तो 32 64 में भी जा सकता है, यानी आज तक हम IPv4 पे काम कर रहे हैं, तो IPv4 पे 32 बिट है तो आर्किटेक्चर तो 64 है, लेकिन ये तो नहीं कहता कि इसका मतलब कि एक वक्त में 64 बिट्स प्रोसेस होंगे, सिर्फ ये कह रहा है। अगर आपकी आपकी चलें, आपकी फाइल की बात हम करते हैं, वो तो 1 गीग की है, आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी साइज तो 1 गीगा बाइट्स है, इसका मतलब है कि 8 गीगा बिट्स है, तो ये तो इस वर्ड में नहीं आती। लाजमी तौर पे पहला वर्ड होगा 64 का, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, एंड इन दिस वे कंटिन्यू होगा अप टू 8 गीगाबाइट्स, गीगाबिट्स। क्या ख्याल है बात? सर 100% क्लियर। नाइस, वेरी नाइस। तो आई अप्रिशिएट, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपकी वजह से औरों को भी समझ आ जाएगी, ये भी अच्छी बात। और दूसरी बात ये है कि एक दफा समझ लोगे फिर सारी जिंदगी, कम से कम ये क्वेश्चन आपके सामने जब भी उठेगा आप बोल्डली जवाब दे दोगे। ठीक है, तो नाइस। तो आपको ये, हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारा, अगर ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, हमने IPv6 का डुअल स्टैक बना दिया, यानी वर्जन 4 भी रखा और वर्जन 6 भी रखा। अब आपकी एप्लीकेशन की मर्जी है कि वो इस पे जाती, अगर आपने दोनों, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से भी आपको दिखाऊं तो मैं यहां पे देता हूं ipconfig/all, आप भी करके देख सकते हैं। देखो मुझे IPv6 का एड्रेस भी मिला हुआ है जो कि लिंक लोकल एड्रेस है, और मुझे IPv4 एड्रेस भी मिला हुआ है, IPv4 एड्रेस भी मिला हुआ है। इसका मतलब क्यों कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल स्टैक है, although कि इसको मैंने IPv6 एड्रेस अभी नहीं दिया, ये इसका लिंक, जब भी आप उसको IPv6 एनेबल करते हो इसको लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कुछ बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. वेरी Yes, नाइस, sir. वेरी नाइस शोएब एंड ऑल। तो मैंने कहा कि लिंक लोकल एड्रेस क्या है, अभी मैंने आपको लिंक लोकल एड्रेस बताया, ये है आपका लिंक लोकल एड्रेस, देखिए लिखा हुआ है साथ में, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। तो ये कहता है कि IPv6 लिंक लोकल एड्रेस enables a device to communicate with other IPv6 enabled devices but only on the same link. By same link means the same subnet, the same network, the same local area network. लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा ये प्राइवेट एड्रेस है, जैसे प्राइवेट एड्रेस से भी तो आप लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते थे ना, तो आप इस लिंक लोकल, अगर आपके पास IPv6 एड्रेस, मेरे पास IPv4 एड्रेस मेरे पास ना होता, जितने भी डिवाइसेस मेरे नेटवर्क में मौजूद हैं मैं इस लिंक लोकल एड्रेस की मदद से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, बिकॉज इट इज यूनिक विद इन द लिंक, विद इन द सबनेट, विद इन द लैन। तो ये कह रहा है पैकेट्स, लेकिन विद इन द लैंड, अगर आपने बाहर जाना है कैन नॉट बी राउटेड, अगर आपने बाहर जाना है तो बार बार हम कह रहे हैं कैन नॉट बी राउटेड। इसका मतलब है कि जिस तरह हम प्राइवेट एड्रेस से बाहर नहीं जा सकते थे बगैर नेट के, यहां पे हम लिंक लोकल एड्रेस से बाहर नहीं जा सकते। हमें कौन सा एड्रेस देना होगा अगर हम IPv6 में जिंदा रहना चाहते हैं, तो मुझे आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं कि GUA दो, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, which is unicast address। ठीक है, with this you can be routed to the rest of the world। फिर क्या कहता है, every IPv6 enable network interface must have an LLA। जब भी आप, जिसे मैंने भी कहा कि जब भी आप IPv6 एड्रेस एनेबल करोगे, अपने प्रोटोकॉल को कहोगे कि जी I have the operating system for both version 4 and version 6, इसका मतलब है कि you have the interface which is enabled for IPv6, you will have automatically an LLA, must have an LLA, link local address। तो कहता है if an LLA is not configured manually, अगर आप खुद करते हो मैनुअली तो नाइस, और अगर नहीं करते हो तो the device will automatically create one। और कह रहा है कि IPv6 addresses are in range FEAT,
इस तरह का देखें, ये भी अभी आपने खुद ही देखा कि इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है FE80, मेरा एड्रेस FE80 है। ये जिससे आगे जो भी एड्रेसेस FE80 से स्टार्ट होते हैं या एंड होते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज दी लिंक लोकल एड्रेसेस। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। मुश्किल? शाबाश, यस सर। वेरी नाइस। तो ये तो बात हमने कर ली लिंक लोकल एड्रेसेस की, और हमने बात, सर शाबाश, ओके। सो और अपने दोस्तों से थोड़ा कांटेक्ट कीजिएगा कि जी अगर इसके बाद भी वो नहीं पढ़ते तो फिर कम से कम हम अपने आप को कसूरवार नहीं कह सकेंगे। तो हम आगे चलते हैं जी। ओके, अब हम आते हैं कि अगर हमें अपने, मैंने थोड़ा सा तो आपको क्लियर भी कर दिया कि अगर आपने GUI फॉर एग्जांपल स्टैटिकली अपनी विंडो मशीन को देनी है तो कैसे देंगे, अभी मैंने आपको बताया। और अगर आपने अपनी मशीन को GUI और LLA देना है राउटर को मिसाल के तौर पे, तो वो कैसे देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पहला हमारा नॉलेज का पार्ट था, यहां से हमारा स्किल का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जेंटलमैन, सबसे पहला मिसाल के तौर पे मैं अपने पास ये एड्रेस लिख लेता हूं, कोई लाजमी नहीं कि यही एड्रेस दिया जाए, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि जनाब आपका जो एड्रेस है वो है 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 डबल कॉलन 1/64। ये IP एड्रेस हम किसी इंटरफेस को देना चाहते हैं राउटर की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, थोड़ा सा ही टाइम बचता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ पैकेट ट्रेसर पे। तो अगर आप लोग भी पैकेट ट्रेसर खोलना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने अपना यूजर नेम एज ए ईमेल दे दिया, और पासवर्ड ही मुझसे भी मांगेगा तो पासवर्ड भी दे देते हैं। पासवर्ड दे दिया। जी, एक राउटर यहाँ पे गिरा देता हूं, मिसाल के तौर पे ये राउटर। अब देखते हैं कि इसकी कितनी इंटरफेसेस हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि इसके पास दो इंटरफेसेस हैं, एक गीगाबिट 0/0 और एक गीगाबिट 0/1। मैं इन दोनों को IP एड्रेस देना चाहता हूं, ठीक है जेंटलमैन, क्योंकि आपको ये दिखा रहा है कि इस पे, और अगर आप इधर से नहीं मेरी बात मान रहे तो मैं इस तरह भी मैं नवा सकता हूं कि जेंटलमैन CLI पे गए और यहाँ पे कहा नो, क्योंकि हमेशा हम नो कहते हैं कि डायलॉग ना दो। ये देखें इस वक्त हम किस मोड में चले गए, यूजर एग्जिट मोड में। अनेबल लिखता हूं तो मैं चला गया प्रिविलेज मोड में। कॉन्फ टर्मिनल लिखा तो मैं चला गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इससे पहले मैं यहाँ से एग्जिट करके एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, शो IP रूट, नो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देख सकते हो जेंटलमैन कि इसमें कितनी इंटरफेसेस हैं। इसकी दो इंटरफेस हैं, एक गीगाबिट 0/0 और एक गीगाबिट 0/1। और ये बता रहा है कि ये दोनों इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो कोई भी IP इनको असाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कैसे करेंगे, कॉन्फ टर्मिनल, उसके बाद इस इंटरफेस जिस पे IP देना है उस इंटरफेस पे जाओ। तो गीगाबिट 0/0 0/0 सॉरी 0/0, मैं इस इंटरफेस पे आ गया। बस जिस तरह IPv4 देता था उसी तरह IPv6 है। जस्ट ये है कि आपने IP लिखने के बजाय IPv6 लिख देना है, IPv6 एड्रेस, और जो एड्रेस आप देना चाहते हो लिख दो यहाँ पे 2001 कॉलन DB8
db8, आपकी मर्जी है कि प्रेफर्ड फॉर्म लिखते हो कंप्रेस्ड लिखते हो, मुझे कंप्रेस्ड अच्छी लगती है क्योंकि टाइम कम लगता है। देन :1 :1/64 बगैर किसी स्पेस के, कोई सबनेट मास्क नहीं है। इंटर कर दिया, क्योंकि इसने कुछ जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। नो शट करता हूं कि भाई इसको ओपन भी कर दो, तो ये हो गया। देखिए आप कह रहा है कि मेरी इंटरफेस 00 क्या हो गई है, स्ट्रेट अप हो गया है। इसी तरह इसकी दूसरी इंटरफेस पे जाता हूं, यहां से एग्जिट करता हूं। दूसरी इंटरफेस है इसकी गीगाबिट 0/1 0/1, एंटर करता हूं, ये कर दिया। अब इसको भी आईपी देते हैं, तो IPv6 जस्ट लिखना होगा, IPv6 एड्रेस, और एड्रेस दे देते हैं 2001 कॉलन db8 ही दे देते हैं, db8 कॉलन ACAD कॉलन 2 कॉलन 1 विद /64। देखिए इंटर कर दिया, नो शट दे दिया, खुल जाओ, नो शट डाउन। अब आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसको दूं यहां से एग्जिट करके, थोड़ा सा टाइम रहता है, मैं दोबारा एक्टिव नहीं हूंगा, मतलब यहीं पे क्लास को खत्म कर दूंगा क्योंकि लेस देन 1 मिनट मुझे शो हो रहा है। तो मैं अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो देखें, अब आप इसको दोनों को एड्रेस को मिलना चाहिए। गलती तो कोई नहीं की। जल्दी के अलावा तो और कुछ भी नहीं किया। फिर जब ये कह रहे हैं ठीक है तो बस